Good morning, dear students. I hope the work which was given in the last week that has been done by all. Is everyone has done? Okay. I think all students are not doing work in time from my point of view. Beta, if you feel any doubt anywhere in any question, ask me on the same day. Okay. And when you think period is about to come, जैसे period Friday को आता है, some students are asking on Thursday कि मैम what was there in this question. So it should not be like that. Okay, you have to be just complete your work in time. Already we are having 2 periods in a week, and if you will do these things, then you should know yourself, your level. Okay, so soon we are going to meet in the school. Yes, all are happy that you will come in the school, everyone. Yes, good. So let us start our work. Our work is now, as you know, we are doing tissue chapter. Tissue chapter में we have started the connective tissue. Okay, connective tissue के 3 parts थे: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Loose and dense we have done. Loose क्या था? जिसमें cells were loosely packed, and dense means the cells were compactly packed. Okay, loose के थे 2 types, areolar and adipose. Okay, areolar is also called as packaging tissue of the body. These points we had done already. And adipose, which stores the fat globules. Clear? Ligaments and tendons we had done कि किसने मसल्स को जॉइंट से जॉइंट किया, किसने जॉइंट्स को बोन से कनेक्ट किया. So this is the ligaments and tendons. Now next is specialized connective tissue. Clear? Specialized connective tissue में firstly we are going to start the cartilage and bones. Clear? जो blood वाला part है, blood, lymph, उसकी cells, plasma, we will do after this. Clear? So firstly we are going to start this part. Specialized connective tissue. Clear? जो क्या है, mostly we call it skeletal tissue. Okay, skeletal tissue. Skeletal tissue is mostly called as supportive tissue. Clear? क्या बोलते हैं? Supportive tissue. Because as we will look about bones, and this bones क्या है? It provides framework to the body, provides structure to the body. ये हमारे जो delicate organs हैं उनको support करती है. You can see many parts, bones are there many in the body, comparatively cartilage. Okay, so we will going to start the cartilage and bones now. Let us start cartilage. As you all know that cartilage part which is not having bones, जिसमें bones नहीं होती हैं. Like you can see on this part of ear, tip of nose, in which bones are not present. Clear? So cartilage, it is a non-porous tissue in which cells are widely spaced. Cartilage क्या है? Non-porous tissue है जिसमें cells क्या है? Widely spaced है. Okay, so it is semi-solid and contain matrix of chondrin. Clear? Semi-solid है और contain matrix of chondrin means chondrin means it means the matrix contains of sugars and proteins both. Chondrin का meaning क्या है? The material which is made up of sugar and protein. You can write somewhere chondrin means sugar plus protein material. Clear? Which is having both things. So cells are called, जो cells present होंगी cartilage में, these are called as chondroblast. Okay, cells are called as chondroblast. जो cartilage की कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो किससे कवर होती है? पेरिकॉन्ड्रियम से. ओके, जो कवरिंग है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, किससे होगी? दैट शुड बी कवर्ड बाय द पेरिकॉन्ड्रियम. सो कॉन्ड्रोब्लास्ट आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स इन ग्रुप्स ऑफ 2. जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है किसमें एम्बेडेड होगा? मैट्रिक्स में, ग्रुप्स ऑफ 2, 4 एंड मोर इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लैक्यूम. क्लियर? जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो कहाँ पे एम्बेडेड होंगी? मैट्रिक्स में, ग्रुप में होंगी, ग्रुप्स की फॉर्म में.
2 में, 4 में और मोर इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। उस स्पेस में जो किससे है, फिल्ड, एक फ्लूइड से फिल है, दैट इज कॉल्ड एज लैक्यूने। लैक्यूने क्या है, स्मॉल चैम्बर्स। लैक्यूने आर द स्मॉल चैम्बर्स, स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ओके, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स। क्लियर? क्या सपोर्ट मीन, जो फ्लूइड लैक्यूने हैं किससे सपोर्ट होंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, बट कैसे हो, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स से। क्लियर? इट इज फाउंड इन नोज टिप, ईयर पिन्ना मीन्स दिस पार्ट, रिंग्स ऑफ विंड पाइप मीन्स ट्रेकिया, जो हमारा ट्रेकिया है वो, और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो हमारी लॉन्ग बोन्स है उनका एंड, एंड एंड ऑफ रिब्स। Where we can find the presence of cartilage, we can find this ear pinna, nose tip, rings of windpipe. Windpipe means trachea. End of long bones and lower ends of ribs. Clear? In shark fish, the whole skeleton is cartilaginous. जो शार्क फिश है उसका पूरा स्केलेटन कैसा है, पूरी बॉडी कैसी है, कार्टिलेजिनस है। क्लियर? कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, ओके, टू द वर्टिब्रेट्स बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज बोन्स, बोन पार्ट। बोन मीन्स विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे। क्लियर? इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, उनको एक क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? जो कार्टिलेजिनस है दैट इज मेड अप ऑफ द मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो कार्टिलेज है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का बनता है मोस्टली, एंड इट इज हैविंग नो ब्लड सप्लाई। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती। क्लियर? होगी तो बहुत लेस होती है, इट इज वेरी लेस। कंपैरेटिवली अगर देखें तो बोन्स में दीज आर हैविंग रिच ब्लड सप्लाई, ओके, एंड दीज आर मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ मटेरियल्स। लाइक इट वाज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, बट बोन्स जो है इट इज मेड अप ऑफ 30% ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और कौन से हैं, लाइक कोलेजन फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर? ऑर्गेनिक में 30% और इनऑर्गेनिक 70%. Clear? You can write these points because these points I have not written here. Clear? They are having, means blood supply is not there, rich blood supply is not there. In bones, rich blood supply is there. It contains organic materials. It is made up of organic materials, and it is made up of bones, organic and inorganic both. Organic 30%, inorganic 70%. 30% that is called as means collagen fibers and glycoproteins, and 70% inorganic which consists of the phosphorus, calcium. Why it is used to say that the milk is to be taken by everyone? Because milk में क्या है? There is calcium, and calcium is very important for the strong bones, to make your bones strong. Bones को strong करने के लिए मिल्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि मिल्क में क्या है बॉडी के लिए, कैल्शियम है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Am I right? I hope you all are taking milk in proper amount. It is to be taken by everyone. I know some girls personally who are not habitual to take milk. It is very bad. Just if you are not taking, start from today only. It is to be taken by everyone. Okay? If there is the lackness of calcium in the bones, अगर बोन्स में कैल्शियम की लैकनेस हो जाए, then it causes osteoporosis. मीन्स जो बोन्स हैं उनकी वीकनेस, ओके, लाइक जस्ट पेन इन लेग्स, पेन इन हैंड्स, इट इज देयर. सो फॉर मेकिंग अ बोन स्ट्रॉन्ग वी शुड टेक द डाइट विच कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम मोस्टली. ओके, सो लेट अस कम टू द बोन्स पॉइंट. इट इज स्ट्रॉन्ग हार्डेस्ट टिश्यू ड्यू टू द कैल्सिफिकेशन ऑफ इट्स मैट्रिक्स. हार्डेस्ट क्यों है? क्योंकि जो इसका मैट्रिक्स है किसका बनता है मोस्टली, कैल्शियम का. कैल्सिफिकेशन, ओके, कैल्सिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. In bones, the matrix of calcium salts
is deposited around protein fibers. In bones, the matrix of calcium salts is deposited around protein fibers. Minerals provide rigidity. The proteins give elasticity and strength. Proteins क्या देंगे? Elasticity और strength. और mineral क्या देंगे? It will give to make them rigid in nature. A compact bond consists of living bone cells. Like these cells called as chondroblast, or these cells are called as osteoblast. Okay, cells of cartilage are known as chondroblast. Cells of bones are known as osteoblast. A compact bond consists of living bone cells called osteoblast, which are embedded in a firm calcified matrix. जो किस में embedded है? एक calcified matrix में, means जो matrix, जो fluid किसका बना है? कैल्शियम का. The osteoblasts are contained in lacunae. Lacunae means small chambers, small compartments. Lacunae which are arranged in circle present throughout the matrix. Okay, the osteoblasts are contained in the lacunae. किसमें contained है वो? Lacunae में, in small compartments में, which are arranged in circles present throughout the matrix. Okay, the blood vessels passing through space provide nutrients to osteoblast. जो blood vessel कहाँ से पास होंगी? स्पेस के थ्रू, which provide them nutrients to the osteoblast. ओस्टियोब्लास्ट से क्या प्रोवाइड करेंगे? न्यूट्रिएंट्स. ओके, कौन कार्टिलेज का फंक्शन क्या था? कार्टिलेज का फंक्शन था मेनली क्या प्रोवाइड करना? उसको बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मेनली द वर्टिब्रेट्स बॉडी. ओके, एंड फंक्शन ऑफ द बोन्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू द बॉडी टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. क्लियर? सो इट इज अबाउट द कार्टिलेज एंड बोन्स. Clear? It is about the cartilage and bones. Let us take a recap of these. I will send after the video difference of these two. Okay? Today we will do only these two. Clear? जो next part है, we will continue that part on Saturday. ये सिर्फ आज का ही part है. Because if we do these also and the rest part also, then there will be a confusion. So better it is we can do these in 2 days. Okay, so let us take a recap of it once. Cartilage क्या है? Non porous tissue है. Okay, which is it contains mostly organic materials in which cells are widely spaced. It is semi-solid and contain matrix of chondrin. Chondrin means a mixture of sugar plus protein. Cells are called chondroblasts. Are embedded in matrix in groups of 2, 4 or more in fluid filled space called lacunae. Lacunae क्या है? Small chambers है, small compartments है. Clear? Supported by a strong but flexible matrix. It is found in nose tip, ear pinna, rings of windpipe means trachea, end of long bones, lower end of ribs. In shark fish, the whole skeleton is cartilaginous. Shark fish का जो पूरी इसकी structure है that is made up of cartilage. Okay, organic material है, blood splice not rich. Now bones, it is strong, hardest tissue. Hardest क्यों है? Because of its calcified matrix. Okay, in bones the matrix of calcium salts is deposited around protein fibers. Minerals provide rigidity. Proteins gives elasticity and strength. A compact bond consists of living bones called osteoblast, cells of cartilage chondroblast, cells of bone osteoblast are contained in lacunae which are arranged in circles present throughout the matrix. Okay, the blood vessels passing through the space means जो blood vessels lacunae से पास होंगी वो किस लिए होती हैं? So that these can provide nutrients to the osteoblast. Okay, so ये है cartilage और bones के लिए. Please watch the video carefully everyone. Okay, if any kind of doubt is there, you may ask in the comment section. Okay, you may take a screenshot of this
although I will send after the video. Please watch the video carefully. As I said earlier, doubt is there, ask in the comment section. Thank you everyone. Thank you.